Good morning, class 10th. Students, in today's video lecture, we are going to discuss some important carbon compounds like ethanol and ethanoic acids, their physical properties, chemical properties and uses. Okay, students? So, let's get started. Students, many carbon compounds are of great importance to us and find applications in almost all aspects of our daily life, as we have seen earlier. So students, in this section we shall study mainly about the two commercially important carbon compounds, that is ethanol and ethanoic acid. Students, in today's video lecture we shall discuss about ethanol. Okay, students? Students, usually the term alcohol refers to ethanol. Usually the term alcohol refers to ethanol. Students, man has been using ethanol for thousands of years, especially in the form of wine. Ethanol is the second member of the homologous series of alcohol. हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर है इथेनॉल. स्टूडेंट्स, alcohol is an active ingredient of all alcoholic beverages such as beer, whiskey, wine, some digestive syrups, etc. Students, ethyl alcohol is also known as grain alcohol. Why? Because it is prepared from starchy grains. So students, ethyl alcohol is also known as grain alcohol. Also known as grain alcohol. बच्चे, मैं यहाँ पे क्यों ये लिख रही हूँ? बिकॉज ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं बच्चे. वाई इट इज नोन एज ग्रेन एल्कोहल? बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्ची ग्रेन्स. स्टूडेंट्स, इन इंडस्ट्रीज एल्कोहल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर. आपका शुगर केन होता है ना, उसकी फर्मेंटेशन से भी हम एल्कोहल को मैन्युफैक्चर करते हैं. Otherwise, students, alcohol is a good solvent and it is also used in medicines like your tincture, iodine, cough syrups and many tonics. Students, consumption of even small quantities of dilute ethanol causes drunkenness. Although this practice is condemned, it is a socially widespread practice. Students, however, intake of even a small quantity of pure alcohol, जिसको हम absolute alcohol भी बोलते हैं, can be lethal. It is important to mention that long-term abuse of alcohol is the root cause of various health problems. Students, intake of even a small quantity of pure alcohol can be lethal. ध्यान रखना इस बात का. जो आपकी इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल अगर आप कंज्यूम करते हो, इट कॉजेस ड्रंकननेस. स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है इथेनॉल का? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, इसका फॉर्मूला क्या है? C2H5OH. कैसे ड्रॉ करेंगे? C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H. इस कार्बन की 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गई बच्चा. अब इस कार्बन की बारी है. OH है, अल्कोहल है, इथेनॉल का जो है फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे O और H भी आएगा. आप OH साथ में भी लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज molecular formula of ethanol is CH3 CH3 CH2. इस तरीके से भी लिखते हैं हम OH, or you can simply write it as
C2H5OH. Okay students. Now students, preparation of ethanol. How we can prepare ethanol? Students, we shall study about industrial preparation. Students, ethanol is manufactured by the fermentation of carbohydrates like sugar or starch. As I said you before, by the fermentation of carbohydrates, starch or sugar. Fermentation of starch or sugar. That means by the fermentation of carbohydrates. Students, ethanol is prepared on commercial scale by the fermentation of sugar. In the absence of air. Ethanol, or you can also call it as ethyl alcohol, gets oxidized to ethanoic acid in the presence of air. Students, from starch हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है बच्चे? माल्टोज में. माल्टोज आपने आई थिंक लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ा होगा बच्चे. देन आपका जो माल्टोज है, it will be converted to glucose and glucose is further converted to ethanol. And students, from sugar, how can we convert ferment ethanol or ethyl alcohol? Sucrose converted to glucose plus fructose. Okay बच्चे. Then again glucose will be converted to ethanol. Now students, reaction देखते हैं how it can be actually converted. Okay students. फ्रॉम शुगर हम जो है इसकी रिएक्शन देखते हैं. C12H22O11. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज प्लस वाटर गिव्स अस ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला आई थिंक सबको पता होगा. C6H12O6 plus C6H12O6. This is the form of fructose and this is glucose. Again students, अभी देखिए हमने रिएक्शन. Glucose is again converted to ethyl alcohol plus it gives out carbon dioxide. This is your ethyl alcohol or ethanol. So this is how the reaction takes place. Students, we can also manufacture ethanol by the hydration of ethene in presence of dilute sulfuric acid. See how? By
hydration of ethene in presence of dilute sulfuric acid. Let us see. CH2 double bond CH2. You all know this is the formula of ethene plus water gives out in presence of dilute sulfuric acid. Sulfuric acid is H2SO4. Gives out ethanol. So we can also prepare ethanol by the hydration of ethene. Okay students. So this is all about your preparation or manufacturing of ethanol or your ethyl alcohol. Okay students, now move on to the next, that is physical properties of ethanol. Okay students. So students, now physical properties of ethanol. Students, first physical property of ethanol is physical state, color and odor. So students, pure ethanol is a colorless liquid having a pleasant smell and a burning taste. जो आपका प्योर इथेनॉल होता है, that have a pleasant smell, burning taste and a colorless liquid. Okay students. Next one is boiling and freezing points. Next physical property क्या है बच्चा? Boiling and freezing points. So students, ethanol is a volatile liquid. Volatile मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. Moving जो है vaporize हो जाता है with a boiling point of 78.1 degrees Celsius. 78.1 degrees Celsius and freezing point is -118 degree Celsius. Okay students, freezing point क्या है? 118 degree and Celsius. You can also convert it into Kelvin. Students, next one is density. Density क्या हो गया बच्चे? You can simply say भारीपन. Students, ethanol is lighter than water as its density is 0.79 gram milliliter inverse. इनवर्स आई थिंक आपको पता होगा बच्चे, जब हम कोई चीज अपॉन में लिखते हैं तो जब हम उसको ऊपर लिखते हैं तो दैट कैरीज -1 चार्ज. यू कैन आपने जो है ये पढ़ा होगा आपके 8th के पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर में. सो स्टूडेंट्स, its density is 0.79 gram milliliter inverse. Okay students. Students, next one is solubility. Students, ethanol is miscible with water in all proportion due to the formation of hydrogen bonds with water molecules. Students, ethanol क्या है? Miscible है with water because of the presence of hydroxyl group in it. Okay students, miscible with water because of the presence of hydrogen. Students, next one is conductivity. Students, ethanol is a covalent compound and does not ionize easily in water. Hence, it is a neutral compound. जो आपका इथेनॉल है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है जो आयोनाइज नहीं होता इजिली वाटर के अंदर. सो इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड.
And students, last one is action on litmus. बच्चे लिटमस क्या होता है? जो हमें एसिड और बेस की प्रेजेंस बताता है. लिटमस पेपर यूज करते हैं हम. Students, ethanol is a neutral compound as I told you. So it has no effect on the color of litmus because it is a neutral compound. So it is neither acidic nor basic. So it is a neutral compound. तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा लिटमस पे. Students, also it is a bad conductor of electricity and has no effect on litmus solution. Actually, ethanol is even weaker acid than water. This is main point to remember. Ethanol is weaker acid than water. Remember this point, बच्चे. It is very important point. बच्चे, आई थिंक आप वीडियोस कम देखते हैं बिकॉज आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, मास प्रमोशन हो जाएगी. ऐसा बच्चे कुछ नहीं है. आपके एग्ज़ाम होने हैं और बच्चे एग्ज़ाम की तो बात ही नहीं होती है बिकॉज दिस इज़ योर बेसिक. आपका जो है ये स्टार्टिंग है. आपकी ये जो है आप बोल सकते हो बेस है 11th और 12th का. सो बच्चे, अगर आप ये यहाँ पे नहीं अच्छे से इसको क्लियर करेंगे, अपने डाउट्स को पढ़ेंगे नहीं अच्छे से, आपको जो है फेस करनी पड़ेंगी प्रॉब्लम्स 11th एंड 12th में बिकॉज इट इज बेस फॉर 11th एंड 12th केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो बच्चे, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे इट विल हेल्प यू इन फर्दर क्लासेस. ओके स्टूडेंट्स, सो बैक टू अवर पॉइंट. नाउ दीज आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ethanol. So students, in today's video lecture, what we did introduction of ethanol and physical properties of ethanol. In the next video lecture, we will discuss about chemical properties of ethanol and we will also discuss some harmful effects of drinking alcohol. Okay students? So, thank you. Have a nice day.